Hello friends and welcome to Raj Malhotra's IS. So here in this video we are going to discuss the latest World Inequality Report 2020 that has been published on 7th December 2021. So it's a very important report for your mains perspective. आपके GS के papers में, आपके essay के paper में, this is going to help you a lot. You can add value to your answers by using the data provided by this report. आपको inequality show करनी है, income inequality, gender injustice, कैसे carbon injustice that is climate injustice जो है world में prevail कर रही है, वो सब का data has been provided by this report. So this is a very important report. Please make a note of all the data that I'm going to give you in this report and use them wisely in your answers. So let's begin the discussion. First, let us see the basics of this report from your pre-perspective. These basics are important. It may be asked ki who publishes the World Inequality Report? The World Inequality Lab is responsible for publishing this World Inequality Report. They started publishing it in 2018. That was the first time this report was published, and this is the second report in this series that has been published now in 2021. Okay, so this was the first report, and this report is authored by Lucas Chancel. Okay, and many other economists have also contributed in the authoring or development of this report, which includes Thomas Piketty, very important economist. You must use his name along with Lucas' name whenever you are writing about inequality. Must mention their names because they are very famous for their theories or their studies or their findings on the issue of inequality. So all these economists have contributed to this report in some way or the other. You can use these two names to support your arguments while writing about inequality. Okay, now let's just see that what are the exact findings of this report. So the first point that the report reflects is that if you see the world scenario, so there is a lot of inequality that exists globally also, within India also, within regions also, when you compare two different regions there also. So here one data is presented that says the richest 10 persons of the world, the richest 10 persons of the world hold 52% of the total global income. जितनी भी the entire world जो income generate कर रहा है, उसमें से 52% is just with these 10 people. कुछ के चेहरे you can see in these pictures. Your Jeff Bezos, Bill Gates, your Elon Musk, all these are the top 10 wealthiest people of your world, and they hold 52%. See the bottom half has just 8.5% of the total wealth that is generated by the world. So बहुत ही concerning this is a data. Here again this report provides how global incomes and global wealth inequality exists in the world. You can see जो हमने अभी discuss किया, top 10 people have 52% of the global income. And then the bottommost people, 50% of the bottommost people have just 8.5% of the total global income. So here two terminologies have been used, income and wealth. Income is just whatever earnings that you are getting on daily or monthly basis. Wealth is your accumulated savings, और your income eventually becomes wealth. जो आप assets create करते हैं that survive for long term, हाँ, that is exact wealth. आपकी अमीरी जो है that generally gets to be known by the wealth, the पूंजी that you have. जैसे हम कहते हैं पूंजी जो आपके पास बनती है, that is your wealth. Income is all the earnings जो आप रेगुलर बेसिस पे रिसीव करते रहते हैं. तो दोनों में ही यू कैन सी अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी अराउंड द ग्लोब. इनकम का वी हैव सीन, इफ़ यू सी द ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो ह्यूज. टॉप आपके जो अर्नर्स है, टॉप 10% जो individuals हैं all around the world, they hold 76% of your global wealth. Okay, top 10% of your global population holds 76% of the global wealth. Okay, and the bottom 50% hold just 2% of the wealth. Almost negligible अगर आप compare करें. So that is the kind of inequality that exists around the world. Okay,
Now let's just see some India specific data. So the report says that India is a very poor and very unequal country with having affluent elite. तो आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं that there are islands of richness और islands of riches in India. और यहाँ कुछ पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूजली रिच, बट रेस्ट ऑफ द majority ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ पुअर. ओके, आप देख ही सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हमने देखी है, देर आर सम पीपल हु आर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑन द वेडिंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट देर आर मैनी पीपल हु आर डाइंग ऑफ हंगर एवरी डे इन इंडिया. So that is the kind of inequality that exists in India and this report talks about. इसके लिए they have presented the data also again based on income inequality and wealth inequality. So the report says कि the top 10% population of India holds 57% of India's income. National income में top 10% population का हिस्सा 57% है. लाइक वी सॉ कि वर्ल्ड में था, वैसे ही यहाँ वी आर सीइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. और बॉटम 10% होल्ड्स जस्ट 13% ऑफ योर national income. That is the kind of inequality that exists, income inequality that exists in India. Similarly, wealth inequality is also high. It says कि जो top 10% आपकी population है that holds 65% of your total wealth, national wealth, जबकि bottom 50% के पास almost negligible के around, you see, almost nothing is present with the bottom 50%. ठीक है, तो these data are very important whenever you have to argue about the inequality or the government failing to redistribute the benefits, है ना. Government का basic role is to take the surplus from the rich and channel it to the poor, but this data shows that the government is failing to act as that the middle channel that is required between the surplus or the rich to the deficit. So that is what this data shows. You can effectively use these data in your essays whenever you have to show the social conditions, the social issues that India is facing. Okay, inequality is one major issue that this report is highlighting. Okay, then the report gives some data about the inequalities that persisted at the time of British. So you can use it in your history part also. That is why मैंने ये include किया है यहाँ पे data. आपका history में अगर कभी answer लिखने पे आए that how was the British rule, what kind of impact British rule had, या ब्रिटिश रूल का ओवरऑल सिनेरियो अगर आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाए, यू कैन ऑलवेज से दैट वन सोशल में अगर आपको पॉइंट लिखना हो, सोशल इम्पैक्ट में, यू कैन ऑलवेज यूज दिस डाटा. दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस वन इन दिस डिस्कशन कि ब्रिटिश के टाइम पे भी इनकम इनक्वालिटी वॉज वेरी हाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया. तो टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम पे भी हैड 50% ऑफ द नेशनल इनकम. टॉप 10% के पास 50% ऑफ द नेशनल इनकम थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो. जब ब्रिटिश हमें राज कर रहे थे तब भी ये सोशल इशू ऑफ इनइक्वालिटी परसिस्टेड. ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ट्राइड टू सॉल्व दिस इशू. कैसे किया? सी, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PM नेहरू वी adopted a socialist inspired model of 5-year planning, जिसमें बेसिकली सोशलिस्ट मॉडल क्या था कि दैट गवर्नमेंट टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज और द बैंकिंग सेक्टर. यू कैन से नेशनलाइजेशन हो गई थी, तो गवर्नमेंट ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ दीज बिजनेसेस सो दैट इट कैन चैनल द वेल्थ equally and distribute that equally amongst the population of the country. Okay, so that is why we to reduce this inequality we adopted this socialist model, and we were successful to reduce inequality by 35 to 40% during that time. But then we moved to the your LPG era. Okay, so what happened in the LPG era? This income inequality again reached to its extremes. फिर ऐसा क्या हुआ? Why liberalization proved as a bane for India? देखिए, जब liberalization हुआ था then your economic growth was basically what is called as capital intensive. ठीक है,
जितनी भी ग्रोथ हो रही थी दैट वाज सपोर्टेड और प्रमोटेड बाय द यूज ऑफ योर हैवी मशीनरी. ओके, यहाँ पे देर वॉज लिटिल स्पेस फॉर द लेबर. तो majority of Indian population remained unemployed and we saw the phenomena of jobless growth. Okay, तो growth हो रही थी because of this machines and the new technology that we introduced, but there were no jobs. No jobs means no income या little income to your population that your population had. That means poverty increased. Okay, social conditions of your society, you know, got worsened. Okay, and resultantly your inequality also increased. जो rich थे, they were growing by the use of these machines and you know all the technology, but the poor were not getting even the basic services, and they that is how the inequality widened with the introduction of LPG model. That is what this data says. Okay, so you can always use this data. जब भी आपको GS1 में भी ग्लोबलाइजेशन पे कमेंट करने को आ सकता है, लिबरलाइजेशन पे, इकोनॉमी के पार्ट में भी LPG रिफॉर्म्स पे कमेंट करने में आ सकता है. देयर ऑल्सो इन द नेगेटिव्स ऑफ द रिफॉर्म्स यू कैन ऑलवेज यूज दिस डाटा. ठीक है, इस रिपोर्ट का यूज़ यही है. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किन किन टॉपिक्स के अंडर इन सब डाटा को यूज़ कर सकते हैं. अभी के लिए यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज 5 और 10 पॉइंट्स दैट आई विल डिस्कस हेयर. उसको बाद रिलेट कीजिए उनको विद द टॉपिक्स दे कैन गेट कनेक्टेड टू. ओके, फिर अपने आंसर्स और एसेज में उसे यूज़ भी कीजिए. दैट इज़ व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस डिस्कशन. ओके, द नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के बारे में दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट. देखिए, जेंडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. एसेज में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है. आई थिंक 2017 में दैट देयर वाज अ एसे दैट सेड फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज़ अ मिथ. ओके, तो उसमें भी यू कुड यूज़ दिस डेटा. तो ऐसे ही विमेन पे हर साल क्वेश्चन आना ही है GS1 में या GS2 में या ऐसे में. सो यू कैन यूज़ दिस डेटा देयर ऑल्सो. सो वॉट एग्जैक्टली द रिपोर्ट सेज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इज़ दैट कि the share of women in total your labor income is just 35%. तो जो भी आपका पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लेबर इनकम जो है अर्न हो रही है उसमें से women is getting just 35% of the income, while the rest 65% is going to the men folk. Okay, तो ये हो क्यों रहा है ऐसा? ये जो गैप है, why is that gap existing between the two genders? There are two reasons for this. Okay, पहली बात तो there are not all women are not participating in your labor force. देखिए, जैसे आप इंडिया की ही एग्जाम्पल ले लीजिए. अकॉर्डिंग टू डेटाज ओनली 27% ऑफ इंडियन women are actively working in our labor force. Rest are not working. If you see कि होना क्या चाहिए कि 50% ऑलमोस्ट women जो है दे फॉर्म 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन. ठीक है, 50% जो women हैं they should all participate in the workforce and they should get same income, and that is how they will have same amount of proportion of the share in the labor income of the world. But यहाँ पे क्या हो रहा है कि labor force में पहले तो there are not all the women are not participating, only 27% of the women are participating, and there is also gender pay gap. ठीक है, सेम काम के लिए men get paid more than the women. तो इसी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से women's labor income में share is just 35%, while the share of men in the labor income of the world is 65%. Okay, so this is again a very concerning figure. You can see in this also 1990s में भी women का labor income में share was just 30%. ठीक है, women का labor income में share was just 30%, और अभी भी after 20 odd years this has increased to just around 35%. सिर्फ 5% increase हुआ है, and men still dominate in the share of their labor income of the world. Okay, so this is a concerning data. You can use
it whenever you have to show gender inequalities in your economic perspective, you know, you have to give a economic perspective to that. Okay, that is how you can use this data too. Next, again a very important topic, you can use this one in your carbon injustice का topic. So see, whenever you talk, अभी आपने COP26 की भी बहुत सारी discussion सुनी होगी. You see these big countries like USA, EU की countries, they keep blaming India for all the pollution and all that stuff. Especially, you know, US के former president जो रह चुके हैं अभी, last president जो थे, he was very, you know, vociferous in you know, blaming India for the pollution that the world faces. But the truth is that these bigger countries or the richer countries are the maximum, you know, hold the maximum responsibility of the pollution that the world faces or the emissions that the world faces. तो यहाँ भी इस रिपोर्ट में सेम ही फैक्ट को corroborate किया गया है. It says कि टॉप 10% जो पॉपुलेशन है that accounts for 48% of the emissions. तो आप देखिए जो रिच लोग होते हैं, they have multiple cars, they have multiple ACs, they have multiple of these, you know, objects that are responsible for majority of the emissions. अब देखिए एक एग्जाम्पल, एक थोड़ा फनी एंड लाइट एग्जाम्पल भी है शाहिद कपूर का. ही इन वंस in a show mentioned कि उनकी वाइफ जो हैं she switches on the AC और पूरी रात AC चलता है at the lowest temperature and she puts on 4-5 blankets. तो it just shows कि because they can afford to waste electricity and AC so much, तो they don't care about the environmental impact or the carbon footprint that they are having. Okay, so that is how the rich people, you know, they are the rich countries and rich people are the major parties who are responsible for the global emissions. वही इस रिपोर्ट और इस डेटा में शो किया गया है. अब देखिए बॉटम 50% सिर्फ 12% emissions कॉज कर रही हैं, जबकि टॉप 10% are emitting around 48%, have 48% share in the emissions. So that is how this shows the climate injustice or climate inequality, carbon inequality that we see अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, इस डेटा में भी यही कहा गया है आगे दैट व्हेन यू कंपेयर द बॉटम 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, EU एंड USA, व्हाट डू यू सी दैट इफ द बॉटम 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन emits X units, okay, of carbon, then the bottom 50% population of EU emits 5 times of that amount. The amount released by India's bottom 50%, EU's bottom 50% releases 5 times that amount, and USA's bottom 50% releases 10% of that amount. ठीक है, तो this shows the country wise, you know, inequality, carbon inequality. India को they keep, USA and EU keep blaming for emissions, but see the data is against them. डाटा साफ आपको बता रहा है कि दे आर द मेजर, यू नो, पोल्यूटर्स. दे नीड टू चेक देयर फुटप्रिंट. अगर आप पर कैपिटा एमिशंस भी देखें तो इंडियाज पर कैपिटा एमिशंस आर वेरी लो. यू सी, जस्ट 2 units per capita we are releasing. ठीक है, this is the same data that I showed you in the info that graph. Okay, so you can always use this. जब भी COP पे discussion, इस बार देखिए COP26 is a very probable topic in your mains this year especially, तो उसमें आप ये डाटा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं to show that how it's the responsibility of the richer or the developed world to act towards, you know, climate change, because they are the major parties responsible for climate change, so they should own up to their responsibilities. Okay, now the next data says that the wealth, the share of, you know, the billionaires in the total global wealth has increased from 1% to over 3%. पहले उनका global wealth में share अगर 1% था, तो now global wealth में उनका share is 3%. Okay, that is how the rich are becoming richer. और COVID में ये impact
ये फिनोमिना और भी प्रोमिनेंट हो गया था, बिकॉज वी सॉ कि पुअर हेल्थ एक्सपेंडिचर या जॉब लॉस उनको फेस करना पड़ा था, माइग्रेंट यूज ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस. बट ये जो रिच थे, दे वर गेटिंग रिचर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी दैट दे यूज. देखिए, आपने देखा ही टॉप वेल्दीएस्ट पीपल कौन है, दोज हु आर वर्किंग ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोविड में बंद नहीं हुई थी. फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल्सो ग्रू इन दिस टाइम, हॉस्पिटल्स ग्रू. ओके, सो द वेल्थ ऑफ बिलियनियर्स इंक्रीज्ड स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम. तो आपको अगर कोविड पेंडेमिक का भी इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट देना है, देयर ऑल्सो यू कैन यूज दिस डेटा दैट हाउ द रिच ग्रू रिचर वाइल द ग्लोबल बॉटम हाफ इनकी इनकम में प्रोग्रेस गॉट halted because of COVID. COVID का impact mention करते हुए भी you can use this data. Okay. The next point that the report says is that while the nations have become richer, but the government has become poorer. What this means is that the majority of the wealth is being held by the private sector. Okay, totality of the wealth is in the private hands. That means again, इससे एक interpretation तो हम ये भी लगा सकते हैं that the government has failed to effectively redistribute your wealth. ठीक है, गवर्नमेंट का रोल होता है कि सरप्लस और रिच पीपल से it taxes those people and then redistributes that wealth to the poor or the needy. Okay, तो दिस शोज कि द गवर्नमेंट इज गेटिंग पुअरर. गवर्नमेंट डजंट हैज़ दोज रिसोर्सेज जो इसको जनरेट करने चाहिए. इवन गवर्नमेंट के ओन बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग दैट इफेक्टिवली. वी कैन ऑल्सो से फ्रॉम दिस डाटा गवर्नमेंट इज पुअरर. दैट मीन्स गवर्नमेंट के ओन PSUs और बिजनेसेस आर नॉट इफेक्टिव. इट्स टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट इफेक्टिव. अदरवाइज तो ये गवर्नमेंट जो होती वेल्दियर होती विद द वेल्थ ग्रोइंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उनको टैक्स कर करके. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग. सो इवन कोविड के टाइम पे आप देखिए तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. 10 to 20% ऑफ द GDP दे बोरोड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड नाउ. ठीक है, so this also you can use to show how the wealth is getting concentrated in the private hands and the governments are failing to redistribute or generate economic growth for the rest of your population. Okay. And the report also says that the quality of inequality data around the world is not very good. So उनको analyze करने में, research करने में भी is an issue. So you can use this small fact whenever you are talking about data. Whenever there may be sometime an essay can be asked on the data is now the currency, as we say. पहले oil था currency, now data is the new currency. So whenever you are talking about data anywhere and you have to mention the issues of these data, apart from security privacy issues, you can always mention the issues of data quality. डेटा हमारे लिए बहुत यूज़ आता है टू एनालाइज रिपोर्ट्स और रिसर्च. पॉवर्टी को एनालाइज करना है आपको, इनइक्वालिटी देखनी है, यू कैन यूज़ डेटा एंड मेक योर पॉलिसीज़ और फ्रेम योर स्कीम्स अकॉर्डिंगली. बट अगर डेटा की क्वालिटी पुअर होगी, यू कांट यूज़ दैट डेटा इफेक्टिवली. Okay, that is what this point highlights. So you can always use this point in your data discussion. Finally, the report says कि अब इसके लिए solution क्या है. जो इतनी global inequality we are seeing, तो उसका solution क्या है. It recommends that we should progressively tax our population. Progressive taxation means the people having more wealth should pay more tax and the people having less wealth should pay less tax. Okay, that is progressive taxation. जिसके पास ज़्यादा है उससे ज़्यादा लो, जिसके पास कम है उससे कम टैक्स लो. दैट इज़ हाउ यू कैन जनरेट. रिपोर्ट सेज 1.6% ऑफ ग्लोबल इनकम्स, जिसको फिर आप यू विल बी एबल टू यूज़ इट टू फाइनेंस योर एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन या क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए. इन एनी वे यू कैन यूज़ द एक्स्ट्रा इनकम दैट यू जनरेट from progressive taxation. So this is the solution that the report provides. Okay, so this was basically about this whole report. Hope this helps. Thank you for watching.